So if we take the example of US, 40 years, from now, they were, rampant disease because of smoking. Yeah. Smoking was rampant in US. Everywhere, it was smoking. And they are actually in a decline because of so much awareness about smoking. They have banned public smoking. As such, there is a lot of awareness. So in US, actually, the incidence of this disease is coming down. In India, it's the opposite. It's going up, and probably in the next 10 years, world's largest population of heart patients will be in India. Okay. So one, genetically, as a race, we are prone. Two, we are not aware. So smoking is on the rise, in fact. Diabetes is uncontrolled. Diet habits, nobody's bothered. Physical activity, nobody's bothered. So basically, it's on the rise. As soon as somebody turns 30, they should get their whole cardiac risk profile. So before 30, it does not matter much, because it has been seen that even if you start treatment, it does not translate into any benefit. But as soon as somebody turns 30, especially an Indian, they should get, which includes their lipid profile, they should get their the TMT, hemoglobin 1AC, which indicates how much your blood sugar has been. So I mean, for all these risk factors, they should get it tested. And if any of the risk factors are there, then they have to work on it. And then obviously you can delay it, or prevent the disease. So this is how for an Indian, so 30 is the age. So what happens is that because of their hormones, females are relatively protected. Okay. In this age group, 30 to 50, Okay. females are, because of their hormones, are protected. Okay. It is only beyond 50, once they hit the menopause. Okay. After that, females also become, Vulnerable. Yes, so their risk increases. Okay. Sir, you just shared something that, like, you told that Indians have a high propensity to heart diseases. Like, it's basically because the point that is smoking and See, westernized. basically, one is, no, this is as a race. Okay. So what has been seen is that हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जैन भारत शो। और आज का पॉडकास्ट वाज शॉट इन अमृतसर। इस पॉडकास्ट के गेस्ट थे डॉक्टर पंकज गोयल, अ कार्डियोलॉजिस्ट। इस पॉडकास्ट का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट मेरे पे पड़ा, क्योंकि सर से मैंने कुछ चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें पूछनी थी रिगार्डिंग ओबेसिटी। यू ऑल नो आई एम फैट। तो उन चीज़ों के जो मुझे आंसर्स मिले वर एन आई ओपनर फॉर मी। तो मेरी वेट लॉस जर्नी अब शुरू हो चुकी है, ऑल थैंक्स टू डॉक्टर पंकज सर। और इसमें हमने और भी काफ़ी बातें की ऑन अदर टॉपिक्स लाइक इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग ऑन हार्ट, और व्हाट शुड अ 25-year-old डू राइट नाउ टू मॉनिटर हिज और हर हार्ट, एंड शुड वी डू रनिंग और ब्रिस्क वॉकिंग। काफ़ी सारे टॉपिक्स थे, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स। दिस पॉडकास्ट, अगर मैं एक सेंस में, एक वर्ड में इस पॉडकास्ट को डिफाइन करूं, तो इट वाज एन आई ओपनर। आई होप इट्स एन आई ओपनर फॉर यू एज वेल। सो प्लीज वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। वी अपलोड अ पॉडकास्ट एवरी वेंसडे एंड सैटरडे। So subscribe to our channel, like this video, and make sure you never miss an episode from the Jain Bharat show. Enjoy the show. So thank you so much, sir, for coming to our show, and it's a pleasure to have you here. So how are you, sir? I'm good, thanks. Okay. And it's a pleasure to be on your show. Sir, so we would like to start with like a intro of you, like please give the audience to tell the audience how. Like your basic background, sir. So basically, I'm a heart surgeon, heart as well as vascular surgeon. So basically, what I do is that I do all the heart surgeries like bypass surgeries, valve surgeries, and also vascular surgeries, which means surgeries of the blood vessels. So like patients with diabetic foot, or patients who have had gangrene or have difficulty in walking because of blood vessel problem. And basically, I belong to Meerut in Western UP. So my schooling was there. I did my MBBS, that is undergraduation, from there. Then I did my master's in general surgery, which was from Lucknow KGMC, and then I did my super specialization in cardiac surgery from Delhi. And then basically cardiac surgery requires a lot of skill learning,
it's a long, tedious process. So after that, I was in Chennai, because Chennai is where all pioneering work has been done. So there's a hospital called Madras Medical Mission. One of the pioneer surgeons, Dr. K.M. Cherian, so I worked with him for 3 years. Then I went to Australia for 2 years for heart transplant and artificial heart. And then in Amritsar, I've been here since 2003. So 20 years now in Amritsar. Okay. सर ऑस्ट्रेलिया में आपने किस चीज़ की पढ़ाई की? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से जो बेसिक कार्डियक सर्जरी है वो, if I put it plainly, it's basically a first world medicine. Okay. It's a very sophisticated kind of medicine. And now gradually, India में भी होने लगा है काम, लेकिन pioneering work सारा जो है वो बाहर ही होता है. So basically Australia had gone for training into artificial heart implantation, जिसको हम जिनके पेशेंट्स के हार्ट बहुत वीक हो चुके हैं एंड नो सर्जरी कैन बी डन, सो वी हैव आर्टिफिशियल हार्ट्स, so they can be implanted, and also transplantation. Okay. Heart transplantation, okay. Heart and lung transplantation. So I had gone for that to learn those techniques there in Australia. And sir, what prompted you to go to Amritsar, to practice? See, basically Amritsar is, just work has brought me here. Okay. So basically at that time, I'm talking about 2003. So when I had come with all these things, at least in North, the hub was Delhi, and Escorts Hospital was the only big hospital. Rest others were small hospitals, so there were not much of opportunities. Right. And Escorts, when I joined Escorts Delhi, and wahan to it's a big line. There are a lot of people, and it's a big hierarchy, is such long hierarchy that it will take ages. So they were building this Amritsar hospital as their first hospital outside Delhi. Okay, I see. So basically, for me, it was an opportunity to start independently and start this unit. So that thing prompted me to come here. So basically, I have otherwise no connections in Amritsar. I see. Yeah. Sir, some doctors choose their field, like whichever field they like, or sometimes कभी-कभी सीट का विषय होता है, किसी में सीट मिलती है, किसी में सीट नहीं मिलती. तो what was your reason to become a cardiologist? Okay. So basically, luckily for me, that was not a problem. Okay. Yeah. So for getting the seat was not a problem. Luckily. We can see that. Yeah, my father is a dental surgeon. Okay. So, and he never pushed me that you become a dental surgeon. So so basically, I wanted to, at that time, when I was doing, so we had two options only, either medicine or my father being a doctor, and so he stayed in a medical college campus. So for me, kind of it was fixed, that doctor, because I was exposed to. Yeah. The other thing was, I was quite like a handyman otherwise, I was do a lot of tinkering jobs and all. Okay. So my family thought when I was small that he would become an engineer, but my math was a bit weak. So and especially with that, so I became a doctor. But at that time I was not sure, obviously I never knew that I would become a heart surgeon. But then when I went into medicine, then I realized, that because of this tinkering thing, that surgery is the one which I wanted. That is what excited me. So I wanted to become a surgeon. I used to hate taking long histories, with the patients, like a physician, measuring blood pressure and all those things. So I never liked it. So that is how I became a surgeon. And then when I became a surgeon, then at that time, I actually, before deciding which specialty, I just visited hospitals, where my seniors were, what. Yeah. So basically, cardiac surgery was the one which excited me. There's so much of technology involved. There is so much of action involved, adrenaline, everything is at knife's edge, so that was the thrilling thing. Yeah. The other thing is, as a kid, you must have heard of Reader's Digest magazine. Yeah. I have. So we used to read that, and there was an article about a surgeon in US. He's one of the pioneer surgeons, Dr. Denton Cooley. Okay. So he was in Texas. Okay. Heart Institute. So that time, cardiac surgery was at its peak, because cardiology, stents and all were not there. So it was at its peak, and US was the hub. So basically, he had his own hospital, there were 16 operating rooms, and, his description was he was jumping from one theater to the other, and there was this transplant thing, they would go by a helicopter, get the organ, and so all that, fascinated me a lot. Okay. So that is what ultimately led to this cardiac surgery. Okay.
Sir, it's a very simple science question, but many people or even science teachers find it very hard to explain to students in general. So, sir, basically, what does the like? Sorry, what sir basically what makes a pumping of the human heart? Like, how does a human heart So pumps? basically, human heart is kind of an automatic muscle. It's basically like our muscle, biceps, triceps. So these are also muscles, Yeah. but they are skeletal muscles. So this is a muscle which is under our control. So there's a category of muscles in our body which is not, that is an automatic. We call it smooth muscle, like the muscle in the intestines. As soon as we eat, it starts to churn the Yeah. stomach. So basically, heart is also a muscle, and that muscle has its own, servo control, and it also has its own what we call the intrinsic pacemaker, like not the artificial pacemaker. Yeah, It has an electrical system, so which is programmed that for a normal say adult, it is between say 60 to 80. That is our pulse rate. Yeah. So that electrical system, just keeps it stimulating. So basically, it's just like any other pump, mechanical I pump. see. The only thing is that rather than having a motor, Yeah. it has that muscle, which muscle, it expands, collects the blood, and then, like a pump squeezing, Yeah. it just squeezes it out. Okay. So, and because it is connected to a system, and this electrical system, that is again servo controlled by our body. So if we start running, body's requirement is more. So that is relayed to this electrical system. So that electrical system starts to increase the pulse rate because it wants the heart to pump more blood. So basically, it's a servo controlled mechanism. Ultimately, it's just like a mechanical pump. So that is why now that we have an artificial heart, so these artificial hearts are what? They are mechanical pumps. They are not made of muscle. They are, like Right. rotary pumps. But, still they work. So heart is I would say, ultimate pump, which we are trying to copy. So it's the ultimate pump, which is, responding to the environment, changes in the environment. So it keeps the blood flow adequate even in the most extreme conditions, and when we are resting, it takes rest, it slows down. So it's basically like any other pump. Okay. Sir, so artificial heart और जो normal human heart है, like are we there yet? No, it's a long way. It's a long way. Long So way. right now. The only thing is that, so there is one thing which we call is assist device. So basically, it can assist. Okay. So the heart pump is basically, it gives us a pulse. So it is pulsatile. There is a upstroke and a downstroke. Yeah. And these artificial hearts are basically rotary. They will give a linear flow only. Okay. So we are not there. Okay. So we are nowhere near. But, at least we can replace it. So people, who would not live say more than 3 months, 4 months, can now live for decades I see. because of these artificial hearts. Okay. Yeah. So, but we are not there. Definitely, it's a lot of paraphernalia which is required. Lot of medicines they have to take. It's not that you get implanted like our own heart. We don't have to care. Yeah. Right, sir. So, but yeah. So it's the ultimate pump. So is this available in India? Artificial heart? Yes, it is available. Okay. It is available. It is, as I said, in the first world, it is very expensive, Yeah. but it is available. Okay. Yeah. Okay. And most of the work actually is being done in south. Unfortunately, South. north is way behind. Okay. Way behind. Yeah. Okay. So, sir, what in your your cardiologist? So, what constitutes a healthy heart? So basically, healthy heart is one which keeps its function. The function is to pump the blood, and in all conditions. Okay. So basically, if for a young adult, if you are able to jog, if you are able to do intense exercises, and without any problems, that is a healthy heart. And for a say elderly, if obviously the activity comes down. Yeah. Okay, so if the elderly is able to basically do the normal functions without any problem, that means that's a healthy heart. So basically, it can be functionally healthy and structurally. So it is not necessary like for an elderly, it may not be structurally perfect. There may be problems, but if it is, person is able to do most of the duties without any problem, then functionally it is fine. Yeah. So as the age advances from say perfect structure, we move to perfect function.
because we know that with aging, like all other things in the body, the heart is also going to deteriorate. It is but natural. So, but functionally, if it is okay, then we consider it as healthy. Okay. So basically the Functional, functionality, if it's fine, it constitutes as a healthy heart. Yeah. Okay, cool. Sir, how do you think like the problems or complexities regarding the human heart in the entire world is a big problem, like especially in India, you know? So, do you think it's whether regarding the lack of proper treatment or the lack of awareness? Yeah. So basically, for heart problems, actually, the most common problem is what we call coronary artery disease. That is the disease of the blood vessels. So basically, heart is such a heart. See, basically, heart never rests. Yeah. And there is never a moment in person's life where the heart can rest, because if the heart rests, the person does not survive. So basically, it's a very hard working muscle. Yeah. And because it is hard working, it itself needs lot of oxygen, blood supply, nutrients for itself to function. So for that, the heart itself has blood vessels which keep on supplying it with lots of oxygen. And so if those arteries get blocked, Yeah. then we call coronary artery. That leads to heart attack, or angina, that is heart pain while walking or doing exercise. So basically, the problem is that this is the commonest disease. Yeah. Okay, so this disease can be in many cases prevented in the sense, with aging everybody will get it. There are a few lucky who won't get it, but most of the person, at 75, 80, some kind of disease will occur. But if the patient has diabetes or smoking or other problems, then basically there are certain categories where we can prevent it. So basically awareness is very, very important. So if we take the example of US, 40 years from now, they were rampant disease because of smoking. Yeah. Smoking was rampant in US. Everywhere it was smoking. And they are actually in the decline because of so much awareness about smoking. They banned public smoking. As such, there is a lot of awareness. So in US, actually the incidence of this disease is coming down. In India, it's the opposite. It's going up, and probably in the next 10 years, world's largest population of heart patients will be in India. Okay. So one, genetically, as a race, we are prone. Two, we are not aware. So smoking is on the rise, in fact. Diabetes is uncontrolled. Diet habits, nobody's bothered. Physical activity, nobody's bothered. So basically, it's on the rise. So awareness is a big factor. As I said, structurally, there may be problems, but at least functionally, patients, they can delay this by awareness. So awareness is a big factor. See, treatment, obviously, once the disease occurs, at the right time, will definitely save lives. Right. So it's basically both ways. But the most important thing, at least for heart disease, is awareness. So the first priority should be awareness, because see, as a surgeon, as a doctor, we see all the complications. And we know that, not everything is under the doctor's control. See, we might be giving the best of treatment. Patient, comes in time also, but even then, despite everything, we may not be able to save the patients. Even today, and this is world over, not just India. If somebody has a heart attack, say gets a heart attack even in the hospital, gets the best treatment, then even then, there's a 15 to 20% chance that the person may not survive despite getting the best treatment. So basically, prevention is the best option. Okay. Obviously, if somebody gets a disease, we have to treat. And there comes the awareness. Awareness is that you should get the treatment, not ignore the symptoms, get checked up regularly, and get the treatment at the right time. Because once the problem occurs, then it's your kismat which way it goes, despite getting the best treatment. How can a young person, make sure that he doesn't get this disease, he or she? Yeah, so basically the important thing is that there are risk factors. So certain risk factors are what we call modifiable. Okay. That you can work on and you can decrease. There are certain factors which are non-modifiable, which you cannot. So non-modifiable is your genetics. Okay. If your parents have at the age of 40, 50, chances are that you will also get. Okay. So, but you can't do anything about it. Okay. Then as a race, Indian, I said, you have, this thing,
propensity, at an earlier age to get the disease. So that you can't. As an Indian. As an Indian. You're So- saying heart diseases are genetical? They are genetic in nature? Yes. So the factors which are responsible. Okay. Say diabetes, increased cholesterol. Yeah. Then there's a tendency. See, somebody, there are patients who might not have diabetes, never smoked, cholesterol is fine, young age, still they get it. Yeah. So this is the question mark. Nobody knows. There are some theories that probably it's an inflammation. It's like you get some kind of swelling in the arteries. So that is genetic. Okay. Okay, so you can get. So if there's a family history of early age, early means, say earlier than 45. If somebody has Yeah. parents, then chances are that the sibling will also, the child, the offspring will also have it. get it at an earlier. Okay. So basically, if you are in that category, you should be extra careful. Then there are modifiable factors. Modifiable is, high cholesterol, high blood pressure, diabetes, smoking, stress, inactivity, and, bad diet. So all these are modifiable. So basically, there are two categories of factors. So generally, with the current scenario, as soon as somebody turns 30, they should get their whole cardiac risk profile. So before 30, it does not matter much, because, it has been seen that even if you start treatment, it does not translate into any benefit. But as soon as somebody turns 30, especially an Indian, they should get, which includes their lipid profile, they should get their TMT, hemoglobin 1AC, which indicates how much your blood sugar has been. So, for all these risk factors, they should get it tested. And if any of the risk factors are there, then they have to work on it. And then obviously you can delay it, or prevent the disease. So this is how for an Indian, so 30 is the age. So what happens is that because of their hormones, females are relatively protected. Okay. In this age group, 30 to 50, Okay. females are, because of their hormones, are protected. Okay. It is only beyond 50, once they hit the menopause. Okay. After that, females also become, Vulnerable. yes, so their risk increases. Okay. But for males, this 30 to 50 is, because see, what we have to realize is that between what I call, for most patients, I tell them that 40 to 50 is the most dangerous decade. Why? Because, we are in the thick of our profession. You are working, like mad. You don't have time, you have stress, you are trying to, do all your family duties also, and you don't have time for, say, exercise. Your diet is also not good. So that is the most neglect. And this is the time when the disease, Petals in. yeah, and it really skyrockets, it just accelerates. So this is the most dangerous. So this is the time when we should concentrate on. And sir, what about elderly people? Let's just say if I'm 60 to 65-year-old plus, then what's the frequency of my heart checkup? See, basically after 60, I would say, once they are done, if everything is normal, you can get it done yearly. Okay. If anything is abnormal, just get it 6 months. 6 months. Yeah. Okay, that is a fair timeline. Yeah. Sir, you just shared something that, like, you told that Indians have a high propensity to heart diseases. Like, it's basically because the point that is smoking and See, westernized. basically this is as a race. Okay. So what has been seen is that, because a lot of people are now abroad, so what they have done studies is that even for the same matched population, say if there are non-smokers, Americans and white race and Indians, there will be higher incidence. Okay. So because genetically our arteries are a bit smaller in size as compared to them, and we have a higher. So basically it's a race thing. Okay. So, did they find any underlying cause for this? Like, It's a genetic makeup of the race. Genetic Yeah. makeup. So Okay. yeah, there I'm is. very surprised that race has anything to do with this. Yes, see, there are many diseases, which are race related. There are many diseases, or things which happen more in the Africans Yeah. as compared to Yeah. us. Yes. Yeah. So there are many things. Yeah. Yeah. sir, what is like irregular heart beating? Like, some people face this issue as well. Okay, please Irregular explain. and rapid, Yeah. So what happens is, as I said, there's a basically intrinsic pacemaker. So which normally has a very synchronized kind of,
if it is 72, it will be a very regular paced 72. If it's 60, that means every second there will be one. So what happens is that if something goes wrong with this, if this pacemaker malfunctions, Yeah. or if some other part of the heart takes over. See, normally we have this dedicated area, but any part of the heart muscle can have an abnormal pacemaker. So Okay, if right. so there are certain diseases, or it may be age related. So what happens is instead of this regular beating, it starts to produce irregular beats, and this current is an abnormal circuit. So basically it's an abnormal circuit. So rather than go straight from one point A to B, it goes this way, that way, circulates, and then keeps sometimes takes circles, that current. So that kind of destroys all the beat. This is one condition which is called atrial fibrillation. Okay. So basically what happens is that atria is the top part of the heart, and this atria, it starts to behave like a pacemaker. So irregular, rhythm starts, and so basically it is not regular and it is fast. So this can occur, most commonly it occurs in patients who have diseases of the heart valve. If their heart valve is diseased, because of the back pressure changes, the size of this chamber increases, it stretches, and it starts to behave abnormally. But it can occur in elderly also as an age related process without having a heart problem. So basically what happens is it is just fast and it is irregular, and it is important because it can lead to clot formation inside the heart, and this clot can go to the brain and cause stroke. Okay. Yeah, so that is why it is important. It may not, apart from general, maybe patient might feel palpitations, थोड़ी धड़कन बढ़ रही है, घबराहट हो रही है, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेजर प्रॉब्लम इज दैट उसकी वजह से क्लॉट बन सकते हैं जो कि ब्रेन में जा सकते हैं. Sir, how can we cure it? So basically अगर कोई underlying cause है, if there is an underlying cause, you have to treat that. तो अगर valve की problem है, you have to treat that. Then there are medicines, we can try that medicines. Then there is something called, if it's not a very long standing, it's a recent onset, then we can convert it into by giving shock to the heart. So basically it's like resetting the pacemaker. Okay. So there's there's a special setup where we sense the ECG of the patient, and we have to target it at a right point. That machine does automatically. Yeah. So we can reset the pacemaker by giving that shock. And if it does not, if it's a very long standing, then there are procedures which are done wherein we can pass in a specialized catheter inside which has current. We burn that area. We try to map the whole thing from where it is coming, and we form kind of a box so that that current does not come out of that box. So that area is burnt in a box, so that current keeps rotating there, and the normal pathway gets cleared to make the rhythm normal. So basically so first we try medicines, treating the cause. We can try shock but shock is only for recent onset, not for long. If it's long standing, then we might have to do what we call this is known as radio frequency ablation. So basically we use radio frequency to ablate the area. Okay. सर मैंने एक बहुत सुना है लाइक एल्डरली से, लाइक जब जो भी मतलब हार्ट का ऑपरेशन स्पेशली करवा के आते हैं, बोलते हैं कि हमें स्टंट पड़ा है या इनके 3 स्टंट डले हुए हैं, इनके सेल डला है. व्हाट डज दिस मीन? सो बेसिकली जैसे मैंने बताया ना कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है. सो जो आर्टरी है दैट इज लाइक अ पाइप विच इज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट. अगर इसमें ब्लॉक आता है, ठीक है ना, कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से ब्लॉक आ गया, तो आगे ऑब्वियसली ब्लड नहीं जा रहा है. सो बेसिकली जो स्टेंट है वो एक हम वायर से अंदर जाके और उस एरिया में हम बैलून से उसको फुलाते हैं. अगर हम केवल बैलून से फुला दें उसको और छोड़ दें तो रिकॉयल है, लाइक एनी अदर थिंग ना, इलास्टिक है, इट विल कोलैप्स एंड अगेन इट विल गेट ब्लॉक्ड. सो बेसिकली टू उसको ओपन रखने के लिए ये स्टेंट्स होते हैं जो कि स्पेशल नाइटिनॉल करके एलॉय है, तो वो उसके बने होते हैं, मतलब डिफरेंट एलॉयज हैं, और इनके अंदर ड्रग्स भी होती हैं. ड्रग्स किस लिए होती है कि जिससे वापस ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, वो धीमे धीमे उसमें से ड्रग निकलती रहती है जो उसको उसी पोजीशन में रखने में हेल्प करती है कि वहाँ कोई और रिएक्शन ना हो.
तो बेसिकली स्टेंट्स जो है उसको ओपन रखते हैं। तो वो 3 या 4 या 5 जो भी है, वो जितने ब्लॉक्स होंगे, जहाँ जहाँ ब्लॉक्स होंगे उनको खोलने के लिए वो बेसिकली स्टेंट्स डालते हैं। तो बेसिकली स्टंट हार्ट के मोस्ट कॉमन डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज हाँ, किया जो जाता है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, जिसकी वजह से चलने में एंजाइना या हार्ट पेन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए। ओके ओके। एंड सर इन्फ्लेमेशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट लाइक ये कैसे होती है? सी बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन है वो, उसको वर्ड जो हम देते हैं, जो इन्फ्लेमेशन है वो उसको Yes. मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डिट मतलब हार्ट का जो मसल है उसकी इन्फ्लेमेशन। तो इसका जो कॉमनेस्ट कॉज है दैट इज़ वायरल इन्फेक्शन। ओके वायरल इन्फेक्शन, सो बेसिकली इट कैन बी एनी वायरल इन्फेक्शन। इवन कोविड में भी लोगों को मायोकार्डाइटिस हुई है। सो व्हाट हैपेंस इज कि हार्ट के मसल की स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है ना, एंड जब स्वेलिंग होती है, उसका इन्फेक्शन हो गया, वो ऑब्वियसली वीक हो जाता है। सो कुछ केसेस में तो ये टेम्पररी होता है, इन्फेक्शन ख़त्म हुआ और वापस आ गया। कुछ केसेस में अनफॉर्चुनेटली ये परमानेंट हो जाता है, तो हार्ट परमानेंटली डैमेज हो जाता है, उनकी हार्ट की पंपिंग जो एफिशिएंसी है वो परमानेंटली कम हो जाती है। एंड सर डज एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन has a role to play in this like affect outside factors? नॉइज़ पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं। Okay. जो एयर पोल्यूशन है, देखो इनडायरेक्टली, बट इट विल डैमेज लंग्स मोर देन द हार्ट। I see. एज बाकी कुछ और उसमें केमिकल्स जा रहे हो, इट माइट लीड टू सम इन्फ्लेमेशन, बट देर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। Any mental stress relation? Mental stress definitely, see any stress, mental stress, because it leads, जो भी स्ट्रेसेस हैं बॉडी में, वो एक बॉडी की रिस्पॉन्स इनिशिएट करते हैं, जिसमें बॉडी में जो हमारी एड्रेनलिन होती है ना, कि एड्रेनलिन रश Right, जो right. होता है ना, जो एड्रेनलिन की रश है, ये जितना रिपीटेडली एक्सपोजर होता है रश का, वो उतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करती है। नॉट जस्ट हार्ट आर्टरीज, एवरीवेयर इन द बॉडी, एंड हार्ट आर्टरीज आर ऑल्सो प्रोन। सो स्ट्रेस डेफिनेटली हैज़ अ रोल टू प्ले। सर व्हाट्स द रोल ऑफ एंजाइटी विद लीडिंग टू हार्ट? उसी बेसिकली वही है, सेम है। इट विल लीड टू दिस। सो बेसिकली हार्मोन्स हैं जो निकलते हैं, ठीक है ना, एंड दे काइंड ऑफ इनिशिएट अ रिएक्शन, जिसकी वजह से वो वॉल को डैमेज कर सकते हैं। ओके ओके। And sir, I've heard this in Google. Like what is a leaky heart? मैंने काफी पढ़ा है कि leaky heart में बेसिकली कुछ जो मैं समझ रहा हूँ, लीकिंग बेसिकली हार्ट जो है ना, बिकॉज इट्स अ पंप, एंड दिस पंप, इसमें क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, कि एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ भेजना है, उल्टा नहीं आ सकता। उल्टा आएगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वो इधर पंप कर रहा है, वो वापस आ रहा है। सो बेसिकली इसके लिए इसके अंदर वाल्व्स होते हैं विच आर यूनिडायरेक्शनल, मतलब वो एक डायरेक्शन में फ्लो जाने देंगे, ऑपोजिट में वो बंद हो जाएंगे। सो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें वाल्व ख़राब हो जाते हैं, Okay. वो वाल्व लीक करने लगते हैं। जब वो वाल्व लीक करते हैं तो वो हार्ट का साइज़ बढ़ाना शुरू कर देते हैं, या हार्ट की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं, या जो है उसकी वजह से ये जो हम एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें, ये भी हो सकता है। मतलब वो बेसिकली हार्ट को डैमेज करना शुरू। तो वो लीकी हार्ट वो होते हैं जिनमें कि हार्ट के वाल्व जो हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे। Sir, any effects that it has on the heart? Like क्या effects होंगे? Like worst to worst? बेसिकली हार्ट का साइज़ बढ़ता है Okay. धीमे धीमे। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है हार्ट का एनलार्जमेंट, तो हार्ट की एफिशिएंसी कम होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को जो हम कहते हैं हार्ट फेलियर, मतलब ये लंग्स में पानी भर जाता है ना, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, पेट में स्वेलिंग आ सकती है, मतलब अल्टीमेटली इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। Any sir triggers of this thing? Like is it triggered by anything? ट्रिगर इट कैन अकर आफ्टर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक Okay. जब आता है तो हार्ट का जो वाल्व का सपोर्ट है वो अगर डैमेज हो जाता है तो एकदम से लीकेज। Okay. हार्ट की एक बीमारी होती है जो इंडिया में कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज़, वो बड़ी Yeah. कॉमन है। सो वो जो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है उसकी वजह से लीकेज हो सकती है। कुछ बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से लीकेज हो सकती है। कुछ हम जिनको डीजेनरेटिव कहते हैं, मतलब विद पासिंग टाइम विद एज डैमेज हो जाता है उसकी वजह से, या हार्ट के वाल्व का इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से डैमेज हो जाए। सो कोई भी चीज़ डैमेज कर सकती है हार्ट वाल्व। And how do you like cure a leaky heart? हाँ, सो बेसिकली जो हार्ट वाल्व है उसको हम लोग असेस करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। देखो इनिशियली तो मेडिकल मैनेजमेंट होता है अगर मैनेज हो सके, Yeah. बट वंस दैट स्टेज इज़ क्रॉस्ड कि दवाइयों से नहीं हो रहा है, देन वी आइदर रिपेयर इट। सो वी हैव टेक्निक्स टू रिपेयर इट ओपन हार्ट सर्जरी करके, और अगर नहीं होता है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए आर्टिफिशियल वाल्व्स आते हैं, ये इस तरह के, ये बेसिकली ये मेटल का वाल्व है, ये हार्ट वाल्व है, ठीक है ना। Okay. तो ये देखो ना, यूनिडायरेक्शनल, सो बेसिकली इट विल क्लोज Yes. एंड दिस वे इट इज़ ओपन। सो Okay. ये बेसिकली दिस इज़ एन आर्टिफिशियल वाल्व। सो ये इस तरह के अवेलेबल है कि जो हम पेशेंट में लगाते हैं उसको, उस वाले वाल्व को हटा के।
Okay. Sir, is there any scientific term for this? Like, what is this condition called? Basically this is called depending on the valve. So Yeah. basically एक mitral valve होता है तो mitral incompetence, aortic valve होता है aortic incompetence जो leaking Okay. valve है. Okay. हाँ पहले इसको regurgitation भी बोलते हैं कई लोग, mitral regurgitation और aortic regurgitation. Okay, sir. Sir, according to you, what are the effects on heart with for someone who is very obese? Like weight gain का heart पे क्या असर हाँ है? देखो जो weight है it has been directly linked. Okay. जो waist size है वो directly linked है to heart disease. And the heart disease which जो मैंने बताया वो coronary artery disease मतलब it's heart attack. So basically उससे क्या होता है कि ये डिपेक्ट करता है आपकी मेटाबॉलिज्म कि आप फैट को कैसे मेटाबोलाइज कर रहे हो. अल्टीमेटली फैट डिपॉजिट्स जाते हैं जो आर्टरीज में जाते हैं. Right. सो बेसिकली अगर आप ओबीज हैं इसका मतलब आपका फैट मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है. ठीक है ना. सो और दूसरी चीज़ है कि अगर आप ओबीज हो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इट शोज दैट इनएक्टिविटी भी है. सो बोथ इनएक्टिविटी एंड फैट मेटाबॉलिज्म जो ख़राब है दोनों ही उसमें डिपॉजिट्स करते हैं. सो इसलिए वेट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड. और जब वेट ज़्यादा होता है तो कुछ चीज़ें जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सारे लिंक्ड हैं वेट के साथ. तो ये भी सब बढ़ जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट करते हैं. तो इसलिए वेस्ट साइज इज डायरेक्टली लिंक टू हार्ट डिजीज. सर इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है हार्ट बिल्कुल. बिकॉज ऑफ द वेट. इन्फ्लेमेशन आर्टरीज की हो सकती है जो डिरेंज्ड मेटाबॉलिज्म है और जो बेसिकली जनरल बॉडी का जो मैकेनिज्म है फैट को बॉडी से मतलब उसको बर्न करने का वो डिरेंज्ड है. सो डेफिनेटली इट लीड्स टू coronary artery disease. Okay. Sir, according what would you prefer, running or paced walking? देखो ये डिपेंड करता है. Okay. ठीक है ना. अब अगर आप यंग हो, आप करते रह रहे हो, सी इन योर से टीन्स 20s, ठीक है ना, तो रनिंग इज ओके. ठीक है. इफ यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम देन इवन इन योर 40s 50s you can continue with that. Because how much time? That I mean it all depends on what your capacity is. Okay. But thing is the problem arises when suddenly in your late 40s 50s you decide to do things which you have never done before. Okay. That is why जो सारा देख रहे हो ना जिम में लोग कोलैप्स कर रहे हैं, ये this is all say people in 40s and 50s probably जिन्होंने पहले कुछ नहीं किया है. Yeah. And suddenly so basically what as I said 40 to 50 is a very dangerous time. वो डिजीज़ बन गया है, अभी आपको तकलीफ होनी शुरू नहीं हुई है, एंड देन ओवर दैट यू स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स. सो सडनली द हार्ट इज़ नॉट यूज्ड टू इट. ठीक है ना. आपने कभी टेस्ट ही नहीं किया कि आपकी हार्ट की कैपेसिटी है कितनी, एंड देन यू आर पुटिंग अ बर्डन. तो उसमें क्या होता है कि देयर आर चांसेस. अब हार्ट की ब्लड सप्लाई डिजीज़ की वजह से कम है, आपने स्ट्रेस उसको इतना दे दिया, वो ब्लड सप्लाई आ नहीं रही है, हार्ट की रिदम बिगड़ सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है. सो बेसिकली फॉर for people in their 4th and 5th decades, जो brisk walking है, you need not go to any gym. There is, I mean, absolutely no benefit as such over brisk walking. So जो 10,000 steps का rule है, so that should be there, at least 10,000 steps at least 6 days. That means 60,000 steps in a week. If you are doing, then you need not, I mean, if you can, आप टेस्ट कर चुके, and you should never जस्ट वही ना कहते हैं ना, दोनों पैर एक साथ नहीं डालने चाहिए पानी में. विदाउट टेस्टिंग स्पेशली इन योर 40s नोबडी शुड कि जाके जिम में वेट कर लिया और रनिंग शुरू कर दी. नेवर. तो उससे बेटर है कि आप पहले अपना टीएमटी जो टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट, जाके कराओ, देख लो आपकी हार्ट की कैपेसिटी क्या है. तो दैट इज़ अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस विद योर ईसीजी, विद योर ब्लड प्रेशर, एटलीस्ट यू विल नो कि मैं इतना कर भी सकता हूँ, मैं हार्ट रेट कहाँ तक ले जा, बिकॉज हार्ट रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. आप 160 170 180 तक हार्ट रेट ले गए, ठीक है ना, योर हार्ट इज़ नेवर डन दैट, यू आर नॉट यूज्ड टू इट. तो उस रेट पे हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है. इफ़ यू आर यंग फिट तो एंड यू हैव बीन डूइंग इट देन यू कैन कंटिन्यू. एंड सडनली इफ़ यू स्टार्ट विदाउट टेस्टिंग योरसेल्फ, वो गड़बड़ है. सर आपने अभी बताया कि एज के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट यू शुड डू, और लाइक टाइम भी होना चाहिए कि if you are doing it for a long time then you can keep on continue. Sir, does it only matter with age, or like if you're fat, like अगर आप overweight हो, like if you're 35 kgs overweight, so should you run or should you do brisk walking? नहीं. If you are 35 kgs overweight then again you are at risk. So basically you should never
It should be a very very controlled gradual increase. And the important thing is heart rate monitoring. Unfortunately अभी इतना यहाँ prevalent नहीं है. In fact even I am trying because of all these incidents अभी जो recently हुए हैं, तो उसमें एक system है जिसमें कि ना ये बेसिकली बना है वो रिहैबिलिटेशन के लिए. जो पेशेंट जिनकी हार्ट सर्जरी हुई है, जिनकी ऑर्थो सर्जरी या कोई जैसे प्रोलॉन्ग्ड कैंसर सर्जरी हुई है, वो रिहैबिलिटेशन के लिए उसमें क्या है, इट्स अ कंप्यूटराइज सिस्टम. ट्रेडमिल साइकिलिंग होती है, बट इट केटर्स टू द पेशेंट, इट्स कस्टमाइज टू द पर्सन, एंड ग्रेजुअली इट गिव्स ऑटोमेटिकली इट गिव्स यू एवरी वीक से थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ा के इट ब्रिंग्स योर हार्ट रेट स्लाइट to higher level gradually while monitoring. So that kind of thing should be done for anybody who is at high risk. Fourth decade onwards, or somebody is extremely overweight, वो unguarded कभी नहीं होना चाहिए. So extremely overweight people should not do running if they are not पूरा monitor नहीं किया हुआ उनका heart rate and everything. Exactly. They should start with lots very graduated, slow, and heart rate monitoring should be there. बिल्कुल. Either अब तो smartwatch है, it should be heart rate monitored, and you should never push. Like heart is also a muscle, so but gradually it will keep on getting stronger. Otherwise, you have to train it. Yeah, it is just like a muscle training है. Gradual आपको उसको strain देना है. Suddenly दोगे, जैसे वेट ट्रेनिंग में भी होता है, मसल रप्चर कर जाता है. बिल्कुल. ठीक है ना. लोग उठाते हैं वेट, उनकी डिस्क बैठ जाती है, कभी किया नहीं इतना ज़्यादा. ठीक है ना. सो बेसिकली उसी तरह उसको ट्रेनिंग करना है. तो वो ग्रेजुअल लोड देके बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन. सर हार्ट कभी रेस्ट करता है? लाइक देयर इज नथिंग लाइक दैट. नथिंग, नेवर. And sir, your personal view on effects of smoking and alcohol on a young heart versus on an elder heart, like say 50 plus or 60 plus? See, basically effect is the same. Okay. Irrespective of the age. So smoking जो है ना, वो तो absolute no है. Even one cigarette can cause heart arteries to go into spasm. They can even one cigarette. So smoking तो is absolute no. मतलब if somebody is smoking, वो rare ही होगा कोई बचेगा, otherwise everybody is going to get, and the arteries get very bad when हम तो open करते हैं, देखते हैं, so it becomes a very bad artery. Even the results after treatment are not good. जो alcohol है, see directly it does not affect the heart arteries. बट यह है कि अल्कोहल इटसेल्फ जो है थोड़ा फैट मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है. यूजली अल्कोहल के साथ जो डाइट है वो ऐसी हो जाती है कि तो एक्सेसिव वो अल्टीमेटली इफ समबडी इज ड्रिंकिंग, मोस्ट लाइकली द पर्सन इज गोइंग टू डाई ऑफ लिवर फेलियर रादर देन हार्ट फेलियर. ओके, सो इट इज़ नॉट दैट अल्कोहल विल डायरेक्टली इफेक्ट, बट इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑब्वियसली है उसका. सर मैंने कुछ कार्डियोलॉजिस्ट को एडवाइस देते हुए सुना है कि ग्लास ऑफ रेड वाइन इज गुड फॉर हार्ट, और लाइक बेसिकली ये सारे साइंस फैक्ट्स हैं, ये आते जाते रहते हैं. आई थिंक इट्स ऑल गिमिकी. हाँ, आई डोंट थिंक देयर इज एनी सब्सटेंस टू दैट. वो ये दे कम एंड गो. हाँ, मतलब इट्स नॉट दैट किसी कोई नहीं लेता तो उसको इसके लिए स्टार्ट करने की जरूरत है. मतलब देयर आर बेटर वेज. आप अपनी डाइट कंट्रोल करो, वॉक कर लो, वही बहुत है. ठीक है ना. मतलब इट इज़ नॉट दैट उसको लेके आपको कोई बहुत बेनिफिट होने वाला है. हाँ. सर एक चीज़ मैंने और देखी है कि इन इंडिया, मे बी इन द अब्रॉड एज वेल, small children are getting overweight, like they are obese, like 8-year-old, 9-year-old, and they have so much weight gain and everything, but their parents don't care. Like they might care, but the thing is they think that हमारा बच्चा है, खाने दो उसको, क्यों मना करना है, इसको बाहर का भी खा रहा है. So I would like you to explain this audience कि what's the issue, like after 10 years what will be their heart basically profile? हाँ, important चीज़ जो है, ये जो हार्ट की आर्टरीज की डिजीज़ शुरू होता है, ये स्टार्ट होता है फैट डिपॉजिट से. एंड एज अर्ली एज 15 years of age, in fact और यंगर में भी, फैट स्ट्रीक्स, मतलब दे आर जस्ट लाइन्स, ये बननी शुरू हो जाती हैं. वो तो बॉडी का रिजर्व है कि जब तक वो 80-90% ब्लॉक नहीं होती तब तक हमारा काम चलता रहता है. सो इट टेक्स years and years for that fat to gradually develop and then cause a problem. So if बच्चा अगर ऐसा है, आप उसको फैट मेटाबॉलिज्म उसका ख़राब कर रहे हो, ये फैट स्ट्रीक्स ऑब्वियसली रैपिड से और रैपिडली बन रही हैं उसमें, तो ऑब्वियसली उसको जल्दी बीमारी अभी नहीं आएगी. अभी तो कुछ भी नहीं है. ये सारी चीज़ दिक्कत आती है 10 साल 20 साल 25 साल बाद, तब सडनली एकदम से सारी चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि बॉडी का रिजर्व है. वो आर्टरी ऐसी बनी है कि उसमें 70-80% तक कोई प्रॉब्लम नहीं, काम चलता रहता है.
मतलब अनलेस कोई बहुत एग्जर्ट करे तो बात अलग है, Right. नॉर्मल काम चलता रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि हैबिट्स तो देखो चाइल्डहुड की हैं, अब जब आप बचपन में ऐसी हैबिट डाल दोगे तो ऑब्वियसली वो एडल्टहुड में कंटिन्यू करेंगी, ऐसा तो नहीं कि वो चेंज हो जाएंगी, मतलब है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो वही चक्कर है। Exactly. सो ये तो बचपन से ही एवरीबडी हैज़ टू बी मेड कॉन्शियस, एज सून एज पॉसिबल, कॉन्शियस अबाउट फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट। एंड एवरीबडी, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया में तो चाहे 25 साल पे ही कोलेस्ट्रॉल चेक करवा दो अपना, एटलीस्ट यू कम टू नो वेयर यू स्टैंड, है ना, नंबर्स तो आपको पता है ना कि हाँ भाई मेरा क्या रिस्क फैक्टर है, क्या नहीं है, क्या लेवल चल रहा है, समथिंग तो जितना जल्दी ये वार्निंग मिल जाए उतना बेटर है, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे प्रिवेंशन उतना टाइम आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज all that you are doing today at 25-30 age is you are doing for next 20 years later, that you don't develop this problem at 45-50, आप 70 पे हो जाए चलो, ठीक है ना, so you are trying to postpone that, Right. ठीक है, so what you are doing is for your next what is going to happen 20 years later, so now that we have हमें knowledge है इस बात की, so better act now. सर तो क्या मतलब would you recommend a 25-year-old की एक बेसिक टेस्ट जो उसके हार्ट की कंडीशन बताए, वो एक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है जो कराना ही कराना चाहिए, बिल्कुल, if you are an Indian, मतलब बिल्कुल, एकदम मैं तो चाहिए कह बिल्कुल, सी नाउ टेस्ट कराने में क्या है, सी एटलीस्ट सी बेसिकली इफ यू टेक इट, इट्स अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, तो आप हर एक चीज़ के, कार के भी जाते हो, पूरा सर्विस कराते हो, देखते हो क्या चल रहा है, ब्रेक उसका ऑयल का क्या लेवल है, इंजन ऑयल का क्या लेवल है, फिल्टर की क्या सिचुएशन है, टायर प्रेशर क्या है, बिल्कुल, सो इट्स योर बॉडी, ठीक है ना, सो बेसिकली यू शुड नो, ठीक है, देर आर सर्टन थिंग्स जो एकदम निकल आती हैं विच अभी प्रॉब्लम नहीं कर रही, हो सकता है आपको 5-7-10 साल बाद प्रॉब्लम कर, देन यू आर अवेयर कि हाँ भाई ये मेरे को एकदम से हो गया या ये है प्रॉब्लम, देन यू कैन टेक एक्शन। सो एक बार बेसिकली अपनी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो अंदर चल रहा है, सब पता चल जाए, नाउ दैट वी हैव फैसिलिटी, ठीक है ना, हमें पता चल सकता है, सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, तो करा लेने में तो देखो बेसिकली फियर तो अननोन का ही होता है ना, कि व्हाट यू डू नॉट नो उसका ही फियर है कि हाँ भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, वंस यू नो हाँ भाई ये है और इसका ये इलाज है, देन कुछ लोग तो भगवान के भरोसे भी चलते हैं, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा जो होगा, बस ठीक है, मतलब फिर वो अपनी थिंकिंग है, लेकिन मैं बताऊँ वो जब प्रॉब्लम होती है ना, when they land up into problem, एक्चुअली वो दिक्कत है वहाँ पर, एज अ डॉक्टर मैं बताऊँ ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है, अब वो कहने को तो कहते थे डॉक्टर हो जी, आप भगवान हो भगवान हो भगवान, लेकिन व्हाट दे डोंट रियलाइज इज, मैं तो यही सबको बोलता हूँ कि भाई बेसिकली अभी तक तो किसी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया, जो आते हैं, है ना, आपको अटैक आ गया, आपकी नाड़ियों में ब्लॉकेज, अभी तक तो किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं किया ना, फिर भी हो गया, अब ऊपर वाले ने दिया था, अब ऊपर वाले से तो कोई पूछने नहीं जाता कि मुझे 45 साल में क्यों होगी बीमारी, कैसे क्यों बना के भेजा उल्टा, when they come to a doctor वो they will expect कि अब मैं 90 साल तक जीऊँ, ठीक है, अब भाई 45 की एज में तुम्हें बीमारी हो गई है, अब जो नेचर ने आपको बॉडी दी है उसमें प्रॉब्लम हो गई, अब हम भी तो अंदर से ही करेंगे ना, हम कोई बाहर से थोड़ी कर रहे हैं, योर ओन आर्टरीज आर बीइंग यूज्ड, सो बेसिकली यू देन दे एक्सपेक्ट मिरेकल्स, प्रॉब्लम ये, and then the problem arises, because nobody wants, even we don't want a negative result, who wants negative result, see ठीक है ना, who wants to see a patient die or somebody die at your hands, but they don't realize is that it's not possible, world over हर जगह रिस्क है, सर्जरी का रिस्क है, it's a major surgery, मतलब if people actually in lack of awareness they do not realize what heart surgery is, what complex process it is, how many people are involved, what all technology is involved, each and every pressure, ECG, output, oxygen, CO2, acid in blood, each and everything is monitored, each and everything, so that वो भगवान भरोसे वाला चक्कर है, बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो अब उसमें मतलब भगवान भरोसे तो है, ठीक है, लेकिन अब भगवान ही वार्निंग दे रहा है, उसको भी इग्नोर करो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ये इशू। Sir, according to you, if someone is obese and he or she gets obese in his 20s, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कितनी गिरी होगी आपके सबसे, कितनी गिरी? डेफिनेटली कम हो जाएगी, इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड, मैं तो कह रहा हूँ कम से कम 10-20 साल कम हो जाएगी।
obviously जो question आते हैं वही आते हैं. If it is not controlled, it will see higher risk of blood pressure, higher risk of diabetes, higher risk of heart disease. Even if you don't have diabetes in No, your... even if you don't have earlier, you will get it earlier, and higher risk of stroke, higher risk of sudden death. तो ये सारी चीजें. And sir, talking about diabetes, sir, what do you think is the effect of diabetes on the human heart? Like, are diabetic patients more vulnerable? Yes, to so having there is heart an diseases? absolute clear cut, direct linear relationship between diabetes and heart disease. Basically, diabetes, what it does is that it leads to, again, fat metabolism को derange कर देता है. उसकी वजह से heart arteries जो हैं उनमें blockages हो जाते हैं, and these blockages are very bad. Diabetes में नॉर्मली क्या होता है, किसी को एक पॉइंट पे हो गया, बाकी आर्टरी ठीक है. डायबिटीज़ में व्हाट वी कॉल इज डिफ्यूज डिजीज थ्रू आउट द आर्टरी डेवलप. सो डायबिटीज़ इज डेफिनेटली अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर. A big red flag. I see. Sir, you were just explaining how difficult it is to conduct a heart surgery and everything. तो मेरा क्वेश्चन है कि सर, do we know everything about the human heart? Yeah. See, most of the things we know Okay. broadly. बट से मैं कॉमनेस डिजीज़ की बात करूँ, से जो कॉर्नरी आर्टरी अब डिजीज़ कह रहे हैं, वी नो दैट स्मोकिंग, डायबिटीज़, दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स. बट देर आर पीपल हु डू नॉट हैव अ सिंगल रिस्क फैक्टर, स्टिल दे गेट इट एट एन अर्ली एज. सो देर इज़ समथिंग एल्स. सो उसकी थ्योरीज हैं, जैसे मैंने बताया ना कि कई बार होता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, किसी तरह की स्वेलिंग हो जाती है. देन देर आर पीपल हु डू who are smokers, डायबिटीज भी है, सब है, उनको 80-90 साल तक भी नहीं होती. Exactly. Yeah. Yeah. So that question mark is there. So we do not, obviously there is something which we are missing. So there is lot of individual variation. So majority काफ़ी सारी चीज़ें हमें मालूम है. See basically अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें अपनी कंट्री की, 47 when we got independent, it was I think 38 or something. Yeah. And now it is nearly 72 or something. Yeah. How has it increased? भाई कुछ तो चलो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं बचपन में, ये ना कॉलरा और ये सब, बट मेजरली इफ़ यू सी इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. पेशेंट, भाई आप हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आपके स्टेंट भी हो गया, बाईपास भी हो गया, नी रिप्लेसमेंट भी हो गया, पेस मेकर भी लग गया, आइज भी, मतलब सो बेसिकली इंक्रीज तो हुई है. समथिंग वी हैव अंडरस्टूड, दैट इज़ व्हाई इट हैज़ हैपेंड. ठीक है ना. बट देर इज़ अगेन लॉट ऑफ थिंग्स विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड why it happens, and obviously we do not have the treatment also for everything. ऐसा नहीं है कि we have a fix for everything. Like ऐसा है कि हमें सब पता है जो हो चुका है, बट जो होगा उसके बारे में हाँ, मतलब there there's a lot of are gap. see actually because see when we operate same procedure we do in everybody. किसी का reaction कुछ होता है. Some people we think they are high risk may not survive, they survive. Some people are just routine cases, but they react very differently. So there is that, वो X factor तो है ही, जो अब वो अननोन जो है उसको हम गॉड कहते हैं कि भाई ऊपर वाले की मर्जी है. बट मेजरली अब सी फॉर अ नॉर्मल बाईपास है ना, नॉर्मल पेशेंट आता है वॉकिंग, उसका रिस्क फैक्टर इज 1 to 2%, विच इज वेरी गुड. आई वुड से दैट मीन्स 98-99% वी हैव फिगर्ड इट आउट. वो जो लेकिन एक्स फैक्टर जो है ना 100% nobody can do it. So वो X factor is still there. Okay. So talking about the X factor, like sir, I want to know your opinion on earthing and playing in that earth. Like let's just say, should us as humans be more connected to the human nature, like our mother nature? See basically, specifically for earthing, there have been some studies. वो कहते हैं जो कि नंगे पैर चलो तो वो earthing कुछ कर. Yeah, should we but feet? basically I don't know because I haven't studied that. Okay. But obviously, see, connecting to nature is other way very relaxing. Yeah. So it basically affects your, temperament, your stress levels. So that way, but it may affect, but directly I don't think as such there is a big relationship. They can be a contributing factor, but not a direct relation. Not a direct relation. Yeah. Okay. So meditation and heart. Absolutely. See, again, stress. You have to. So basically, your heart rate goes down, your blood pressure settles down, your respiratory rate, breathing rate comes down. So all these factors definitely reduce the stress level. So basically, if someone is having good habits
from the start of his or her age, so it will create a compound effect. Absolutely. So all these risk factors, smoking, diabetes, blood pressure, lipids, inactivity, they are not additive, they are multiplicative. So if you have two factors, so it is not that 1 plus 1 is 2, or 2 plus 2, you understand? Yeah. So basically it is multiplies, exponential. Yeah. So it is not simple addition. So that if you have one, the second one will increase your risk like that. So it is not just your risk is twofold, it will become sixfold or eightfold. If you have three factors, it will become say tenfold. It is not that it becomes sixfold. Okay. Also. Okay. So basically all these factors have to, see, it does not guarantee that you will not have the disease. Problem ये होती ना, when you, what you have to understand is कि हम जो हमारे बस में हमें करना है, Right. rest you have to live. जो हमसे नहीं हो पा रहा है, see if you are doing exercise, doing diet and everything, फिर भी अब इसके नंबर्स हैं सब कुछ, कोलेस्ट्रॉल कितना, ये सब, अगर नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो हमें दवाई लेनी है, हमें नंबर अपने कंट्रोल में रखने हैं. क्योंकि ये अब उसमें भी कई बार आ जाता है कि ये दवाई कंपनी का है, ये उसका है, उसका है. सी समवेयर यू हैव टू बिलीव समथिंग. ठीक है ना, अब सारी दुनिया कर रही है एंड यू हैव टू सी वेस्टर्न कंट्रीज में देखो ना, उनकी लाइफ स्पैन 85-90 टच करने को आ रहा है, तो कुछ तो सही कर रहे हैं ना वो लोग, समथिंग दे आर डूइंग राइट. सो बेसिकली उनका एक्सपीरियंस सही. एंड इसमें तो हार्ट डिजीज़ में बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने जब से स्मोकिंग करी है देयर इज अ ड्रास्टिक डिक्लाइन. अब उनका एफर्ट इसी में ओबेसिटी पे है, उनके यहाँ चाइल्डहुड ओबेसिटी, और ये तो डाइट पे बड़ा उनका, ये उन्होंने हमसे ज़्यादा योगा कर लिया है. ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने इफेक्ट देखा ना, दे नो कि भाई इसका फ़ायदा है. सो बेसिकली उनके एक्सपीरियंस से हमें लर्न करना है. सो अपने बेसिक फंडा यही है कि अपने को जो हम कर सकते हैं वो करो, और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो भैया, जो नहीं हो रहा है उसकी दवाई लो. Sir, do you think that government in particular, like just central state governments, are not taking enough measures in terms of smoking and drinking to make your lives as a cardiac surgeon a little bit easier? Like, सी बेसिकली स्मोकिंग तो मेरे को समझ में, आई थिंक रेवेन्यू का चक्कर है, आई थिंक इट शुड बी बैंड. okay, वो एक्चुअली सब जगह वो What about alcohol? फ्रीडम. if See, alcohol. alcohol. Let's just say tomorrow if I throw in the particular mainstream of this country, what will you do about this? सी प्रॉब्लम इज, हाँ, सी बेसिकली आई डोंट थिंक बैनिंग एनीथिंग. आई मीन स्मोकिंग में कर तो रहे हैं, वो वार्निंग दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आई थिंक एक्सटेंसिव अवेयरनेस. बैनिंग तो मालूम है ना, अब कहीं भी नहीं चलता, वो इलीगली सारा काम होता है. सो बट आई थिंक अवेयरनेस पे लॉट नीड्स टू बी डन. Okay. अवेयरनेस जो है ना वो अपने आप है नहीं इतनी. ऑल्दो मेरे ख्याल से ऐड तो आते ही हैं स्मोकिंग के, तो टोबैको के तो सब पिक्चर में भी आते ही हैं. तो देखो कोशिश तो कर ही रहे हैं, Yeah, but you know, लेकिन knowledge is never enough. हाँ, Knowledge बेसिकली is ये never enough. This is the only रिपीटेड ना, जैसे बम्बार्डमेंट होता है ना, problem. Yeah. वो होना चाहिए. जैसे if they have done it abroad, we हाँ, can do कि that way. नहीं उस तरह से मैं कहता हूँ, फिर भी हमारे यहाँ देखो स्मोकिंग एक्चुअली अब पब्लिक प्लेसेस में तो Yeah, it is bad. ख़त्म ही है. अगर कोई कर भी रहा है तो मतलब पीपल ऑब्जेक्ट, कोई ना ट्रेन में या कहीं आप ऐसी पब्लिक प्लेस में कोई कर रहा है, पीपल ऑब्जेक्ट. तो थोड़ी स्मोकिंग की तो हुई है अवेयरनेस डेफिनेटली, लेकिन अल्कोहल के बारे में इतना नहीं है अभी भी. बिल्कुल. हाँ. सर अभी पब्लिक, आपने बोला कि पब्लिक में बैन है, व्हाट इज द इश्यूज विद पैसिव स्मोकिंग? Yeah. See again, it is as bad as As bad as as- bad as My God. हाँ. It's the same thing. सेम थिंग भाई. दैट इज वाई मतलब लंग कैंसर के लिए तो है ही, और हार्ट डिजीज ऑब्वियसली इट मे नॉट बी दैट बैड फॉर हार्ट डिजीज, बट ऑब्वियसली फॉर लंग इट इज एज बैड एज एक्टिव स्मोकिंग. Okay. My God. Okay. And sir, what relation do you think is between our spine and the human heart? स्पाइन, Yes. स्पाइन से तो कोई रिलेशन नहीं. I read the second goal. There are parasympathetic and sympathetic nerves located in the cervix. Sorry, क्या लिखा है इसमें? Cervical, like there are. हाँ, so basically वो जो मैंने आपको बताया ना, जो हमारा सर्वो मैकेनिज्म है हार्ट Yeah. का, so that is again controlled by sympathetic. So sympathetic is our adrenaline वाला, so Okay. it increase. Parasympathetic comes. So basically it's a balance between the two. They are located in the cervical spine. Yeah, so basically it starts from the brain and there is a chain, पूरी स्पाइन के दोनों तरफ पे पूरी उसके समझो जंक्शन बॉक्सेस हैं. ठीक है. सो बेसिकली दीज जंक्शन बॉक्सेस डिपेंडिंग ऑन एरिया, जैसे जो हार्ट का एरिया है उसमें हार्ट की नर्व्स निकलेंगी, इंटेस्टीन की नर्व्स, जो हमारा सर्वो मैकेनिज्म है वो इनसे कंट्रोल होता है कि जब हमें ज़रूरत है तो वो उसको इंक्रीज़ कर देंगे, फिर दूसरा वाला उसको टोन डाउन करेगा कि वो बीच में रहे. Okay. हाँ.
So do you think, how do you think heavy metals contaminate our body, and do you think like what's the way they enter our bodies? See, basically heavy metals जो है excessive जो है, they all lead to poisoning. Okay. Excessive levels. So they can lead to deposition in the liver. They can as such heart में भी हो सकता है possibility, मतलब but it's not that common because इनकी processing ना पहले liver में ज़्यादा हो जाती है. So liver is the most which is involved. So liver disease तो काफ़ी common मतलब involved हो सकता है. So what type of diet would you recommend to maintain a healthy heart? See, basically grossly तो ये है कि if you have to keep sort of a calorie deficit. हाँ deficit. So to maintain your weight. ठीक है ना, अदरवाइज अगर आप एक्सेस खाओगे तो वो बढ़ेगा ही, है ना, वो कहाँ जाएगा. सो थोड़ा कैलोरी डेफिसिट. तो बहुत एक बेसिक हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, और उसके ऊपर आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है. मोटे तौर पे जो डाइट है ना उसमें ये है कि जो डीप फ्राइड फूड्स हैं वो मतलब दे शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस अ मंथ. Twice a month? I thought you were going to say twice a week. I'm talking about people in the 4th decade onwards, जब ये हार्ट डिजीज रैम्पेंट. See 20s में if you are working, workout सब कुछ कर रहे हो, then probably even then it starts to deposit in the liver. Fatty liver देखो आजकल सबको हो रहा है, ठीक है ना, and the process starts. So basically आपको hardly a habit डालने वाली है. तो यंग एज में इतना इफेक्ट नहीं होता because you are burning that much also, and your body's fat metabolism is good also at that age. But 40 onwards जो है ना वो drastic उसमें fall होता है. So you will not be able to metabolize it so well. वो जाके चिपके गई, ठीक है ना. So otherwise, so basically as as much as possible fried foods have to be avoided. बिल्कुल absolute no है. And healthy जो हम मतलब अगर हाँ जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें मटन, रेड मीट है, दैट इज़ अ नो बिल्कुल, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हार्ट. चिकन, फिश ऑल आर गुड, वाइट मीट इज़ गुड, ठीक है ना. तो don't promote this honestly. Don't promote this on. But no, see basically if somebody is a vegetarian, I'm not saying that it is good for the heart. I see. Basically it's not that it is good for, the only thing is जो fish है, fish because it has omega-3 fatty acids and all which increase the good cholesterol, HDL जिसको बोलते हैं. So fish that way is beneficial, actually beneficial. लेकिन अगर आप फिश अमृतसरी फिश करोगे फ्राई करके, वो सारा गया ना काम. So जो उसका एडवांटेज होना है वो डिसएडवांटेज, उसमें नमक भी आ गया, तेल भी आ गया, तो वो गया काम. सो इफ़ यू आर बेसिकली टेकिंग, अब ऐसा नहीं कि आप रोज़ फिश खाओ, ठीक है, बट अदरवाइज वेजिटेरियन डाइट में बेसिकली ऑल द वेजीज आर देयर. अगर आप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मतलब बेसिकली आपका एक बिल्कुल डिसिप्लिन डाइट है जिसमें आपको मालूम है कि भाई मेरे 2 चीट डेज हैं महीने में, मेरे जो मर्जी है मेरे को खाना है, बाकी दिन मेरी ये फिक्स ही डाइट है. सॉल्ट, सी अगेन ब्लड प्रेशर और सॉल्ट डायरेक्टली लिंक्ड है. एक्स्ट्रा सॉल्ट, पोटैटो चिप्स, फ्राइज सब डेंजर है. So basically we should not eat red meat and mutton. This is what you're trying to say. हाँ, वेजिटेरियन में दे हैव, नॉन वेज में दे हैव टू अवॉइड. हाँ, वेजिटेरियन में ग्रॉसली ना मतलब देयर हैज टू बी सम डिसिप्लिन. हाँ, बेसिकली ऐसा नहीं कि बंद है, बंद कुछ भी नहीं है, यू कैन हैव एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली इफ यू आर हैविंग डेली अगर आप फ्राइड खाओगे हो नहीं है प्रॉब्लम. KFC is recommended only two times a month, ठीक है ना. यू 2 times a month whatever you want. बाकी ये सॉल्ट देखो, जितना प्रोसेस्ड फूड है बाहर कितना सॉल्ट है, राइट, ठीक है ना. फॉर देम यू नो दैट बिकॉज सॉल्ट जो है ना वो किक देता है, दे हैव टू ऐड, वो करते ही हैं. सी इवन इफ यू सी US एंड ऑल, दे उन्होंने तो सॉल्ट का भी सब कुछ कम कर रहे हैं. वो दे आर एनफोर्सिंग. सॉल्ट इज डायरेक्टली लिंक टू ब्लड प्रेशर, राइट. सो वो करेगा ही करेगा. सी आफ्टर द एज ऑफ 45 नियरली 1 in 2, दैट मीन्स 50% ऑफ इंडियन मेल्स विल हैव ब्लड प्रेशर. 50% after the age of 45 will have blood pressure. By what year? By 45 years of age, after 45. I see. ठीक है ना. So it's a rampant disease. And if you are curtailing salt, ठीक है, तो आपको अगर बॉर्डर लाइन है दवाई नहीं ज़रूरत पड़ेगी, अगर दवाई की ज़रूरत भी पड़ रही है तो कम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना. So basically simple, and the most important thing is physical activity. 10,000 steps का है रूल, तो वो that should be ingrained that you have to do. Okay.
Sir, if two points here. One is ki, is there anything in our diet that Indians are specifically missing, or is there anything that only vegetarians are missing? Yes, sir. ऐसा Even कुछ? vegetarian diet, is wholesome. If you are having your fair share of Like Indians को veggies. बहुत बोला जाता है कि उनकी प्रोटीन डेफिशिएंसी है. नहीं देखो ये मैंने देखो ना आप अपने जैसे जो काफ़ी बिल्डर्स हैं अपने बॉक्सर्स भी हैं Right, right. ये ना वो सब खुद ही कहते हैं मतलब- वेजिटेरियन. इवन शाहिद कपूर का भी रिसेंटली आ रहा था, आई एम अ वेजिटेरियन, वी बिल्ट अप हिज बॉडी. देयर आर मेनी बॉक्सर्स हु हैव, तो ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि मैंने काफी देखा है प्रोपेगेंडा सा होता है कि लाइक नॉन वेज खाने का लोग यही देते हैं कि हमें तो प्रोटीन खाना है, तुम्हें प्रोटीन नहीं जा रहा, तुम क्या ये देयर आर वेज ऑफ supplementing. Yeah, vegetarian diet में. even if you are having a regular diet, it's fine. हाँ बिल्कुल Okay. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. And so, what do you think about mental stress? Like, can mental stress also affect heart disease? Like, to what extent? Like, See, it's a big contributing factor. देखो ना mental stress तो definitely it accelerates the disease. Basically, it increases the blood pressure. It disturbs your blood pressure. Blood sugar control also. Stress से ना body का glucose level बढ़ता है, diabetes और so multiple ways से it affects. Then there's a very strange disease which kind of because of excessive stress. Yeah. What happens is the heart muscle gets stunned. Okay. So एकदम से normal जैसे efficiency 55 है comes down to 25-30. Muscle becomes stunned just because of stress. What is this called? It's a very Japanese name. Even I won't be able to pronounce it correctly. Okay. Tatsumo, something like that. I see. Myocarditis it is called. So basically it's directly stress related. It's proven. So once the stress goes, the heart muscle recovers. In some cases it does not, but so there's a direct relationship to acute stress leading to suppression of the heart muscle. So directly, and that is because of so much of adrenaline and everything, which is so that affects the heart muscle. And plus, the older we are, the worse it is. Yes, obviously. Okay. And sir, like again coming back on this topic, sir, how far do you think is the effect of all of this on a strong-willed person? Like, can a strong-willed person like alleviate then himself No, or himself basically. from these diseases? So Like, let's just say if no. I have mental toughness. No, that has nothing to do with it. Nothing to do with No, this? absolutely nothing. So basically, if you have a disease and it is significant enough, you will have a problem, irrespective of your, Okay. And do you strong think, let's just say, do you think like weak people, like let's just say, physically weak, some people are literally hypochondriac. They have nothing, but they will see like they have everything, Like, do you think those people are especially vulnerable to any such disease? Leave heart. So basically, it's mental stress, they would be thinking. So it's just stress related. Okay. So it is not that it is going to as such cause anything, but it's just part of the stress. Okay, sir. Sir, is there anything like that you would recommend that's a single most important change which can help in, like maintaining a balanced diet or heart specifically? Is there anything? See, grossly, if you say, as I said, a kind of only some discipline. You have the first thing is realization that this thing can happen to anybody, and the best time is to start early in your 25, 30, because 40, as I said, 40 to 50 is the most dangerous. So the earlier you start, the longer you can postpone it. Okay? And one is diet, as I said, absolutely disciplined kind of thing. You should have it under control. It's not that that every day somebody parties every day. So that is trouble. Yeah. Smoking, all the good habits, and 10,000 steps. Physical activity is also very, very important. So basically, physical activity, it reduces the blood pressure, reduces blood sugar, increases your good cholesterol. All those things are there. So these are time tested. Okay. So these are the only things which you can do. Yeah. Okay. So basically, no point in repenting later. Okay. Sir, मेरा एक क्वेश्चन है, like it's a little off topic, but like movies में ना वो बोलते हैं कि दिमाग की मत सुन, दिल की सुन. तो is there any connection to that according to a cardiologist? नहीं वैसे तो नहीं है, but there has been a recent this thing paper है कि उसमें there is some suggestion that that probably heart also has a mind of its own. Okay. So do मतलब you believe it? But I mean, it's a scientific paper. They say there are neural networks and which kind of think
they kind of have a feeling. Okay. So they kind of themselves respond. They are conditioned to respond when they sense कि body में reaction हो रहा है, they kind of sense the thing. Okay, so basically there's a absolutely, I think I was reading it about a month ago only. Great question actually. ठीक है ना? So there's a probably a neural network. That's the suggestion. My God. So the But- heart does things. That is what that paper says. That is Yeah. what it says. But more often, it is a relation. Like if you are thinking something stressed, then the body senses it. It increases the pulse rate. So you feel that okay, fine. Even the heart, yeah, the heart is responding. Okay. Sir, one of our last questions. So, sir, how like your journey has been so far? Like any challenges that you have faced, Yeah, or see, something it's- that you would like to address? Yeah. So basically, I would say for me it's a very full. I mean, I'm doing what I wanted to do. Okay. Okay, so that way I'm very happy, and it's absolutely challenging, I would say. It is. Yeah, so because because a lot of youngsters, they come and ask me, so I tell them one thing, that you can only do it if you have passion I see. for your work. Because what everybody says, even in the medical fraternity, what people say is that only mad people become heart surgeons. Yeah. Okay, the reason being that it's a long and tedious process. The learning curve is so prolonged. As I said, see, I started at the age of 16, 17 when I joined my Yeah. MBBS, and I became, I got my degree in heart surgery when I was 30. My God. Wow. Okay, and that is when I did not have any breaks in between. I was lucky. I got, first attempt. I did not have any break, and even after that, it took me nearly 4 or 5 years to establish. There are extra skills which are required to have, and that time, we did, because it's a very complex thing. You need a whole team. There were not many setups. Now, there are so many setups. There were few hospitals where you could do this kind of thing. So it's a long, tedious. So only if you are into the game, you have passion, only then you will do it. The other thing I tell them is that if you want to make money, then forget. This is the most inefficient way of making money. See, from 16 year onwards to nearly 32, 35, I would say, you are just acquiring the skill. That time, you can start your business, do anything. See, obviously now there are many avenues. That time they were not. Yeah. But it's the most. So if somebody comes with the thing, that if you start comparing, कि यार मैं इस एज में हूँ, यार वो बंदा ये कर रहा है, उसके पास इतना पैसा, उसके पास ये गाड़ी है, then you're gone. Right. Basically, there is no comparison. Because you have, kind of, I would not say wasted, but you have utilized so many years, your prime Basically years. your youth. Basically, if you are, you start establishing a business, even if you are very bad, after 2-3 times you will succeed. By the time you are 25, 26, 30, I would say, you would be established. Here, you start at 35. Okay. Right. So basically, that is the thing. So you ultimately have a passion. So I can say for nearly all cardiac surgeons, heart surgeons at least, they all are into it because they are very, very passionate. And challenges, I would say, is the operations are long. All that technical aspect is there, and you are always on the edge. Yeah. Because that even a one fraction of a millimeter, because the heart arteries where we do bypass, those arteries are 1.5 millimeter in size. My God. So you are putting another blood vessel stitching. We have these telescopes we use and do, but that even one stitch wrong means the patient is gone. So it's just every day it's a life death matter. So ultimately it plays. And How do you deal with this? With see, such basically it's all stress? it's the training. Yeah. One is the training. 14, 15 years. Yeah, so that is what the training is. Training, experience, doing again and again, and that only gives you the confidence. And it's not that, obviously you are stressed also. It does take a toll. Yeah, basically, so your professional aspect is one. The biggest stress, in our current practice is, how the patients respond. Right. And there is the lack of awareness, because they want, 100%, which is not possible. So despite the fact, you explain to them everything, obviously nobody wants a negative, even we don't want. Right. But then the hostility comes. And most of the times, hostility, if you explain, it is not as per se towards the doctor, but because of financial reasons. Because money gets involved. Right. Yeah. Right. Okay, so when the money gets involved, then
So one thing which I find very unfortunate, I don't know whether it is there in other countries, but in our country is that जनरली लोग ना अपनी हेल्थ के बारे में सीरियस ही नहीं है। देखो ना, आप गाड़ी लेने जाते हो, आप ऐसे ही उसकी स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, सब करोगे, शादी में इतना पैसा खर्च करेंगे, गाड़ी में टॉप मोस्ट मॉडल चाहिए, सब चाहिए, लेकिन जहाँ बात इलाज की, मैं बता रहा हूँ, मैं अमृतसर की बता रहा हूँ, प्रैक्टिस में तुम्हें बताऊँ, मेरे को कितने 20 साल अमृतसर में हो गए। आई कैन काउंट और फिंगर टिप्स जब पेशेंट ने मुझे बोला होगा नहीं जी हमें पैसे का कुछ नहीं है, हमें बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए। आई कैन काउंट ऑन फिंगर टिप्स। अदरवाइज मेरे से बात होगी, लकीली आई एम इन अ हॉस्पिटल जहाँ मेरे को पैसे का बात नहीं करनी होती है, भाई हॉस्पिटल वाले का अलग है, इट्स नॉट माई हॉस्पिटल। दिस इज द ओनली रीजन वाई हैव नॉट मेड नेवर थॉट ऑफ मेकिंग हॉस्पिटल, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। यू नो, पैसे की मैं समझता हूँ भाई, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, सर्जरी भी थोड़ी होती है, बिगर प्रोसीजर है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इवन दोज पीपल हु कैन अफोर्ड, लगता है, मैं मालूम है भाई, आप लाख रुपए का आईफोन रखे हो, ठीक है, आप अपने शरीर पे, अपनी जान के लिए आप, मतलब मेरे को, मतलब मैं सुनने के लिए, बात के लिए तरस जाता हूँ कि कोई ये बोले कि नहीं जी आप बेस्ट करो, वी वांट द बेस्ट। नो, मैं कह रहा हूँ इट इज़ लेस देन 1%। तो ये बड़ी डिस्ट्रेसिंग चीज़ है, ठीक है ना। सो एंड इट इज़ अगेन एज अ डॉक्टर, आप अपनी तरफ से क्या है, आप लेटेस्ट जो है करना चाहते हो सब कुछ, बट देन इट्स अ डेटरेंट, ठीक है ना। सो वो इट इज़ ऑलवेज इन द बैक ऑफ द माइंड कि ना पता नहीं यार उनको कि इसका खर्चा भी ज़्यादा है और पता नहीं उनको समझ में, मतलब वो वाली चीज़ है। तो वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि थोड़ा ना, मतलब अच्छा इंश्योरेंस होती है तो इंश्योरेंस इज़ वेरी लेस। भाई आज के टाइम में अगर आप 1-2 लाख की इंश्योरेंस करा रहे हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप हॉस्पिटल में 10 दिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, इट्स नॉट पॉसिबल। हार्ट सर्जरी तो पॉसिबल नहीं है। तो अब वो सारा फाइनेंशियल प्रेशर फिर माउंट हो जाता है। तो हमारे लिए एज अ डॉक्टर सी, मतलब मेडिकल एस्पेक्ट तो एक चीज़ है, वो उसका जो ये वाला जो फाइनेंशियल पार्ट और ये है ना, ये बड़ा कुछ अवेयरनेस कम है, कुछ मेंटालिटी अपनी अभी ऐसी नहीं हो पाई है कि दैट वी हैव टू अल्टीमेटली, जब जान ही नहीं रहेगी तो यार उसका कर क्या लोगे आप, ठीक है ना। तो वो एक चैलेंज है। अदरवाइज तो आई वुड से सी लकीली इन अमृतसर सॉर्ट ऑफ हमने इस्टेब्लिश ही करी है कार्डियक सर्जरी। हम जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे वी आर डूइंग हेयर। एंड अभी रिसेंटली हमने एक एक्मो प्रोसीजर होता है जिसमें कि आर्टिफिशियल हार्ट लंग होता है ना। पेशेंट आई थी, यंग लेडी, जो कि घर में जो एलपीजी गीज़र होता है वो लगा के, एंड शी बिकेम अनकॉन्शियस, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना, वो अनकॉन्शियस हो गई। कॉमन है, मेरे को तो मालूम नहीं था, अभी भी विलेजेस में कॉमन है। एंड हार्ट पंपिंग हैड कम डाउन टू 15%, 15, एंड शी वॉज, आई मीन तरन तारण से ट्रांसफ़र हुई थी, एंड शी वॉज, आई मीन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस गॉन, मतलब मेडिसिन। सो लकीली वो फैमिली समझ गई, सो इट्स अ मेजर थिंग, सो वी पुट हर ऑन आर्टिफिशियल हार्ट एंड लंग, हमने उसको डाला है और 5 days हमने उसको रखा है, रिकवर्ड फुल्ली रिकवर्ड, हार्ट पंपिंग हैज़ कम डाउन एंड मतलब ब्रेन वाइज ऑल्सो शी इज़ फुल्ली रिकवर्ड। सो ऐसी मतलब दीज, सो व्हेन यू आर फीलिंग कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, देन यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, तो बड़ा मतलब यू फील गुड ऑल्सो। बट ये चैलेंज तो है, विच इन द वेस्ट, मैंने तो देखो बाहर काम किया, बाहर क्योंकि फाइनेंसेस आर टेकन केयर ऑफ ना, सो पीपल अंडरस्टैंड। और थोड़े जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो गॉड वाली, वो कहने को तो सब बोलते हैं, मैं मतलब अब मैं नाउ आई कैन डिस्कस एक्चुअली जोकिंगली, हम लोग आपस में बात करते हैं, फ्रॉम गॉड टू डॉग इज वन हॉस्पिटल बिल। पहले आके सब गॉड गॉड कहते हैं और एक हॉस्पिटल बिल आता है, कहते हैं कि तो विच इज़ नॉट सी। अब चीज़ें हैं भी, मतलब जो भी सर्कमस्टांसिस है ना, उसमें अब डॉक्टर का तो बहुत कम ही रोल है भाई। अब चीज़ें हैं जो, अच्छा हार्ट सर्जरी में तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी, अब जैसे वेल्व है, अब दिस इज मेड इन यूएस से, इट कम्स फ्रॉम, वो डॉलर के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, अब क्या किया जाए उसका, दिस इज़ नॉट अंडर आर कंट्रोल, अब इट इज़ एक्सपेंसिव। सो आई थिंक एक बार इंश्योरेंस अच्छे से हो जाए, लोग शुड बी, पीपल शुड बी सीरियस दैट एडिक्वेट इंश्योरेंस। मैं कहता हूँ आज के कल के टाइम में मतलब मिनिमम कम से कम 10 लाख की इंश्योरेंस तो करा के रखनी चाहिए, मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि फॉर एनी इवेंचुअलिटी यू शुड बी प्रिपेयर्ड, कि पहले से करा के रखो, जिससे लास्ट बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखो, हमें मालूम है गवर्नमेंट सेटअप्स का क्या हाल है ना,
अब अभी गवर्नमेंट सेटअप्स में तो कुछ है ही नहीं. अब अमृत पूरे पंजाब में आई डोंट थिंक कार्डियक सर्जरी किसी भी हॉस्पिटल में होती है गवर्नमेंट सेटअप में. हम जीएमसी में तो यहाँ अमृतसर में नहीं होती. आई डोंट थिंक किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो अब प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा. और ऐसी ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती हैं कि आप वो करो. तो बेसिकली मेडिकल चैलेंज तो अपना प्रोफेशन का वो कम है. ये जो साथ का चैलेंज रहता है ना, वो थोड़ा सा वो रहता है ज़्यादा चैलेंजिंग. It's a one hell of a ride. हाँ, एब्सोल्युटली इट इज़. बट इट इज़ हाँ, बट वंस यू सी जो भी कुछ भी हो जाते हैं कभी से वंस और ट्वाइस इन अ ईयर होता ही है. सी बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग हार्ट सर्जरी, सो यू आर डीलिंग विद सिक पेशेंट्स. ठीक है ना. इफ आई एम डूइंग से 300 odd operations in a year, there have to be certain patients who will not make it. We know that. ठीक है ना. So that's the international standard. We know that because patient, it's not that somebody has done wrong. ऐसा नहीं किसी ने गलती, वो उसका डिजीज ही ऐसा है वो. So लेकिन यह है कि कोई पुराने पेशेंट्स आते हैं, you see somebody who operated 10 years 15 years ago, small that time, now they're big. हाँ, उस तरह का. Then that is the in fact biggest happiness which you get. Then you kind of get ready for the next one. Definitely. Contentment is the drug in this case. Absolutely. So basically हाँ वही है कि मतलब passionate तो definitely होना ही. Otherwise you start to get frustrated. Right. सो सर दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. और ये हमारे पॉडकास्ट का एक रिचुअल है. हम अपने हर गेस्ट को एक क्वेश्चन देते हैं जो पिछले गेस्ट ने उनके लिए दिया होता है. Okay. तो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम टेंजिन सुंदू. ही इज अ टिबेटियन एक्टिविस्ट लिविंग इन धर्मशाला. तो उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, हाउ डू यू डील विद मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्रिटिसिज्म एंड हॉस्टिलिटी स्पेशली फ्रॉम योर लव्ड वंस. Okay. So basically I would say that there's a lot of change in the way I responded, say 20 years ago. Okay. Then I would say I'm much wiser. Okay. So 20 years ago, my reaction was quite impulsive. But now it's a very mellowed down kind of reaction. So basically, I kind of have started seeing the other person's point of view also. So I just sit down and I try to analyze, and I also try to talk it with the other, why the person has behaved like. So but this change has come over the years. With hair loss, this thing has come because I used to be very 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 impulsive in these matters before. But now because from my personal experience, what I have realized is with aging, all that black and white kind of thing goes. Most of the things are gray, and you don't want to bother yourself with any of these stupid things. So I just see whether I am bothered about that person or not. If I am bothered, I will sit down and sort it out. If I am not bothered, then I don't give a damn. there's a quote from Christian Bale. He's a Hollywood actor. वो बोलते हैं कि if you have a problem with me, call me. If you don't have a number, I don't think I'm a very big problem. Exactly. So that's the thing. So over the years, I have realized that. Yeah. So sir, one question that you would like to ask us to the next guest. So if you can please write it down. Any question which means something to you, which has a very deep meaning to your heart. Anything that you would like to. The next guest to answer on. The next guest. And we don't know who that person is. Of the person. Irrespective of your expertise. Any question which is close to your heart. Which has any meaning to it. I can't. I don't know. मेरे को लगता है मेरे को सारे जवाब मालूम ही है. Great sir, great. Let's say मैं कुछ पुराने उससे ना, जब during my younger days. Yeah. कोई नहीं. Pen चल रहा है? है ना यहाँ कर. Yeah, sure. Insecurities. Okay. ठीक है ना. Yeah, sir, sign कर दीजिए. Thank you so much. We have one more great podcast. It was Thank you so much amazing, honestly. for this podcast. We have learned a lot. Definitely. चलो, it was a unique experience for me also. Thank you so much.